everyone, so let's move towards our today's topic, which is, as we already talked about anterior cranial fossa and middle cranial fossa. Now in this video we're gonna talk about posterior cranial fossa. So what are the bones which are present in the posterior cranial fossa? Number one is occipital bone and temporal bone. Okay, what are the content which are present in the posterior cranial fossa? Cerebellum, brainstem. Okay, the parts of brainstem are midbrain, pons and medulla oblongata. The vertebral arteries are present. The cranial nerve 9, 10 and 11 is present in the posterior cranial fossa. Facial nerve is present, hypoglossal nerve is present, and accessory nerves are also present in the posterior cranial fossa. The best way to memorize the contents are to memorize it with the foramen. That when you remember the foramen of the cranial fossa, you can easily memorize the thing like कौन सा content है, कौन सी चीज़ पास हो रही है, तो आपको content भी याद हो जाएंगे. Now moving towards the boundaries of the posterior cranial fossa, anteriorly the petrous part of the temporal bone is present, whereas posteriorly squamous part of the occipital bone is present, and roof tentorium cerebelli is present in the roof of the posterior cranial fossa. What is tentorium cerebelli? It is the folding of the formed by the layer of dura mater, that is meningeal layer. Okay, one more thing, the posterior cranial fossa also consists of some part of occipital lobe also. Okay, now moving towards foramen, the largest foramen of the skull is foramen magnum, through which the spinal cord is passed, and that foramen magnum is present in posterior cranial fossa. Now क्या होता है फोरामेन मैग्नम के थ्रू? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो कि कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से. जहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा का लोअर बॉर्डर होता है वहाँ पे फोरामेन मैग्नम ख़त्म होती है और वहाँ उसके बिलो से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है. नाउ द कंटेंट्स ऑफ द फोरामेन मैग्नम आर वर्टिब्रल आर्टरीज एंड असेंडिंग नर्व, डिसेंडिंग नर्व आल्सो. नाउ एंट्रोलेटरल टू द फोरामेन मैग्नम there is a canal known as hypoglossal canal, and as the name indicate, hypoglossal nerve will pass through the hypoglossal canal. Then another foramen is for jugular foramen, and it is for internal jugular vein, and also through this foramen 9, 10 and 11th cranial nerve will pass. So, and it is present between the temporal and occipital bone, so remember this point as well. Then the last foramen is internal acoustic meatus, that is present on occipital bone, and that is for facial nerve. The main contents of the posterior cranial fossa is medulla, pons, midbrain, cerebellum, vertebral artery, facial nerve, 9, 10th and 11th cranial nerve. That's it. Not facial nerve is important, hypoglossal nerve. तो ये कुछ contents आपने याद रखने. बाउंड्री आपने खुद ही ने समझ लेनी है कि भाई क्या चीज़ किस कहाँ से कहाँ तक एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, कहाँ से कहाँ तक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, कहाँ से कहाँ तक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, कहाँ से कहाँ तक मिडल क्रेनियल फोसा है. जब आपको ये याद हो गया इजीली आप रिमेंबर कर सकते हैं. सो दिस वाज द होल टॉपिक एंड गुड लक, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड गुड लक. बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़.